फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Surama Kaushik. Well, what a game. Chennai Super Kings fans, if they were looking out for a win, it was definitely not their day. CSK never felt that they were in the game. They never felt that they were into the competition where people were looking out for some run fire. Talking about Sunrisers Hyderabad, oof, I really can't get over Abhishek Sharma right now. He bowled the first over for two Chennai Super Kings, and before the match started, I was talking with Taus, how good of a decision it is, but I wasn't knowing that he'll do. Create a havoc in the stadium with that kind of batting power in the power play itself. Well, I won't take much of your time and would invite Taus Rizvi to talk about it because he'll tell how good Abhishek Sharma, Aiden Markram, and Travis Head were. Well, Taus, very rare it happens that I fall short of words for Chennai Super Kings. Generally what happens is that I generally talk a lot about CSK, what was their batting, what was their bowling. But as I started this live session, I mentioned it pretty clearly that it never felt that CSK were in this game. Not with the bat, not with the bowl. So nothing eventually worked out for them today. What are the reasons? We'll definitely talk about it. But first up, the man on the screen and others of the Orange Army, starting up with Abhishek Sharma. Yeah, I would like to start with this, yeah. Ruturaj Gaikwad, always a concern, continues to be the captain, the batsman, and then the captain. I mean, who's running the show? I don't know right now, because obviously you saw Dhoni struggling around while he went on to Hmm. bat. I'm not talking about the wicket keeping, but yeah, he came later in the order. But yeah, obviously when you talk about Abhishek Sharma, when you talk about Sunrisers Hyderabad batting, it's Abhishek Sharma, the youngster, and the top heavy batting. And good that the last time sports fans spoke about like how Henrich Klassen after there is no batting after Henrich Klassen, but you don't need batting after Henrich Klassen if the top order, yeah, if the top order performs like that. Abhishek Sharma 300 strike rate plus. What do you need from a youngster? What a beautiful start he got while chasing that total is, and it still was a competitive total. It was a slow wicket, difficult to, not easy to bat on, I would say. But this guy showed confidence there, and then you have Travis Head and Aiden Markram again. Yeah, there are some glitches in Aiden Markram. He was seen struggling against spinners, but then he found ways. He found ways to get back at them. Yeah. Beautiful. I mean, if there was no Shivam Dubey, I think they wouldn't have even reached past 150 or something. Hmm. So That's credit to right. Shivam Dubey for playing fast, and then Ravindra Jadeja, he needs to pull up his socks. 34, 31 out of 23 balls. That's not T20 cricket, and then we are eyeing a good all rounder when it comes to T20 World Cup. So Yeah. bowling is not enough. You need to have that firepower in the later stages of the game with the bat as well. So all in all, it was a poor show from Chennai Super Kings batters as well as bowlers. And Sunrisers Hyderabad बिरयानी खाएंगे आज हैदराबाद में ऑरेंज आर्मी. तो उनका मतलब उनके Bilkul. घर पे ही खेले जाए हैं, उनके घर पे ही खेल रहे हैं, तो उनको पता ही है कंडीशंस क्या था. पहले पता था उनको बैटिंग करनी चाहिए थी मुंबई इंडियंस के सामने 200-250 के ऊपर मार के. अब उनको पता था यार ये मैच में हमको चेन्नई को रिस्ट्रिक्ट करना है, स्लो विकेट रहेगी. तो दे नो देयर कंडीशंस, तो दे आर beware any team going to Hyderabad, just beware how to go about it, because Hyderabad are going to be the very very bad host. Well, actually, before talking about Chennai Super Kings, let's talk about Sunrisers Hyderabad today. Can we have the scorecard, please? Because I was putting out a poll, Taus, and I had put up a post. So everyone who's watching us, please go to Cricket Next, vote there, and let us know who do you find as the most lethal batter from the SRH side. So Taus, when I was putting out that poll, I was just thinking.
2 नाम रखूँ, 3 नाम रखूँ, एंड देन मैंने सोचा कि नहीं यार 4 नाम रखने चाहिए, बिकॉज़ आप जो 4 नाम देख रहे हैं ना इस लिस्ट में, वो इतने बढ़िया बैटर्स हैं that they can prove out to be the match winners any day, especially in this IPL, the way they are batting. Now let's begin with Abhishek Sharma. 12 ball 37, and these 12 balls have been bowled to him in the first 2 or 3 overs, because Abhishek Sharma had already made those 30 odd runs in the first 2 overs. So जो एक मोमेंटम होता है वो अभिषेक ने ऑलरेडी सेट करके दिया था. At the end of the power play, Sunrisers Hyderabad had already made 70 odd runs. So the job was already done. I know a lot of people were expecting some twists and turns when Moeen Ali came and he bowled and he took Aiden Markram and Shahbaz Ahmed's wickets, but it was too late, Taus. Also, जब आपकी टीम में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्क्रम और हेनरिक क्लासन, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, because you know that these batters are of that caliber who can steal the match at any given point. Now I want to know from you, Taus, ये जो एक पूरा इनका टीम का सेटअप है, हमने अक्सर बात करी है सनराइजर्स हैदराबाद में टीम मेंबर्स, यानी कि प्लेयर्स अच्छे होते हैं लेकिन कभी भी बैलेंस साइड वो नहीं दिख कर आती. In Pat Cummins' captaincy, do you think this Sunrisers Hyderabad team has the potential to reach to the final stages? And do you find this side as a balanced one? No, no, I have doubts regarding their bowling. I mean, this is just the initial Okay. stages of the game. Bowling Hmm. तो अभी भी उनका टेस्ट होना बाकी है, because see this requires to be in the top 4 is still easy compared to winning the title, because एक बार टाइटल तक पहुंच गए, फाइनल तक पहुंच गए तो वो बहुत, क्योंकि एवरी टीम इज नाउ सॉर्टेड आउट बाय देन कि यार किसके क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या Hmm. वीकनेस है, तो वो हिसाब से प्रिपेयर होके जाते हैं. तो फाइनल के लिए तो आई मीन टॉप 4 बोलेंगे तो आई मीन डेफिनेटली दीज गाइस हैव ऑल द it's a completely balanced lineup when it comes to top 4 प्लेऑफ स्टेज. मगर अगर Hmm. आप फाइनल की बात करें, बहुत थोड़ा बातचीत डिबेट रहेगा और चलता रहेगा, Hmm. बिकॉज दिस नीड्स कंसिस्टेंसी. आप घर में खेल रहे हैं, आपको कंडीशंस पता है, स्लो रहेंगी तो आपने पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी कर ली, फिर आपको पता है कि यार विकेट पाटा होने वाला है, क्यूरेटर वैसे बनाएंगे तो आपने पहले बैटिंग कर ली. अब जब आप अवे जाके खेलेंगे तो पता चलेगा Hmm. ना, जैसे पिछले मैच में हो गया कि हार गए जाके, अब दूसरा तो पता चलेगा आपकी कैसे आप खेलेंगे. तो अगर आप चेन्नई में सडनली जाके खेलेंगे कि भाई क्या कंडीशन है, क्योंकि फाइनल चेपॉक में होने वाला है, तो आप वैसा कैसे खिलाएंगे, तो वो Hmm. इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे तालमेल बैलेंस रखें, तालमेल रखें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करें. बट Yeah. अगर ये बैटिंग की बात करेंगे, जो स्पोर्ट्स मैन की फिर से मैं बात लाना चाहूंगा, रम्या, Hmm. हेनरिच क्लासन के बाद बैटिंग नहीं है. हेनरिच क्लासन के बाद बैटिंग होने का सवाल ही नहीं रखा, उन्होंने शहबाज अहमद को ऊपर भेज दिया. बोले कि हमको बैटिंग जितना डीप रखना है रखें, जितना नीतीश रेड्डी रखना है रखे. तो आपको डीप जितना भी, अगर मैच डीप में चला जाए, कम रन चाहिए, कम बॉल में ज्यादा रन चाहिए, आपके पास हेनरिच क्लासन, आपके पास नीतीश रेड्डी है. सो दैट वाज अ स्मार्ट मूव बाय कैप्टन पैट कमिंस, और ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग what his team needs and what these local players can do for them. स्पेसिफिकली Hmm. अभिषेक शर्मा को उन्होंने एक रोल दे दिया, भाई तू जाके एंजॉय कर बैटिंग, तू तोड़म तोड़ कर, बाकी हमारे पास है संभालने के लिए. ट्रेविस हेड कैन डू, आई हैव फुल फेथ इन हिम. उसके बाद एडन मार्करम, वी नो व्हाट एग्जैक्टली ही कैन डू, ही इज अ स्टाइलिश प्लेयर, ही कैन हिट, ही कैन बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट स्ट्राइक रेट का जो पंगा है ना, वो अभिषेक शर्मा के ऊपर छोड़ दिया हेनरिच क्लासन. बाकी इधर Hmm. उधर करके पूरा दे हैव. बट bowling continues to be an issue till they play outside. अभी तो मुझे मतलब अभी घर पे सेफ है, मगर बाहर Hmm. जाएंगे क्या होगा, बाहर जितना खेलेंगे, बिकॉज 14 मैचेस में 7 मैचेस तो आपको बाहर ही खेलनी है. फिर उसके बाद Yeah. है बाकी स्टेजेस ऑफ द गेम. फिलहाल तो Hmm. इट्स नॉट अ कंप्लीटली 100% और नॉट इवन 90%, आई वुड से 80% बैलेंस, क्योंकि खामियां है बॉलिंग में अभी भी, मुझे लगता है उनकी. Okay, so you're saying that there are few areas of concern in their bowling. Well, we'll talk about that with Sahil, but before that, Sahil, Abhishek Sharma, what has he done to himself? Last year we saw him; he played some good knocks. This year, it seems that he's unstoppable. Obviously, like Shubman Gill, Sarfraz, he also has a father who always comes to the matches, always applauds him when he plays. But right now, everyone's
applauding him, and everyone's quite interested in watching Abhishek Sharma. How do you see this journey of Abhishek? And also, there is some Yuvraj touch in him too. So, how do you sum up Abhishek Sharma's journey so far? No, right from his under 19 days, he was a very sweet timer of the cricket ball. But with him, consistency was a big problem, and that is what we have seen in his IPL journey so far. That consistency levels not peaking where they should have right till now. I think a lot of things played a role in that. First, the franchise culture at SRH before this year, I think it was completely different, and the Yeah, players, they were bound to get insecure because they were in and out of the side. There were yeah, a lot of confusion with regards to the role which they were supposed to play, the batting positions they were supposed to play. So this year, I think they have made it very clear that Abhishek Sharma is going to take on the bowling, come what may. And with Mayank Yadav, quote unquote, injured for this game, Abhishek Sharma is doing what he does best in the power play, and I think this is a fine batting order for them. But as Tausbhai said, I think थोड़ा सा मेरे को वो ना मिडिल ऑर्डर के अंदर या तो माकरम एक गियर डाउन करके पूरा एंकर करे टीम को एंड तक, कि एक एंड माकरम नहीं छोड़ेगा और क्लासन लासन दूसरे एंड से मारते रहे, तोड़ते रहे. क्योंकि आज जो सिचुएशन हुआ, अगर 185 आज लगे होते चेन्नई के, तो मैच फंस गया था. जिस तरीके से ये लोग आज एक्सपेरिमेंट किए ना, अब्दुल सामद को ही भेजना था ना. मतलब इतना क्या रॉकेट साइंस लगा के शाहबाज भेज रहे हो. नीतीश रेड्डी अच्छा प्लेयर है, पर अब्दुल सामद आपने तो उसको मतलब बहुत साल से बैक किया ना, तो अब्दुल सामद को भेजना था उस पोजीशन में, क्योंकि आज 185 could have been a very different story. Now, having said that, I think they should look to do something with the middle order. I'm not really sure what are the options they have in the middle order. Indian batter, I think Rahul Tripathi है इनके पास एक 3 नंबर का ऑप्शन. राहुल त्रिपाठी यही है ना. यस, राहुल त्रिपाठी इज हियर ओनली. सो राहुल त्रिपाठी आपके पास एक 3 नंबर का ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो. रन वो नहीं कर रहा है, बट रन तो मयंक अग्रवाल भी नहीं कर रहा. तो दोनों में से एक को 3 पे खिलाओ. ओपनिंग आप चेंज मत करो. ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों को बोलो जैसे खेलना है खेलो. लेफ्ट राइट कुछ नहीं चाहिए, 2 लेफ्टी भी चलेगा. ऑल्सो साहिल, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करी, जो आपने कहा कि अगर 185 होते, 185 अगर होते तो बहुत मुश्किल हो जाता. जिस तरीके की स्टार्ट मिली थी, मैं और ताउस वही बात कर रहे थे कि सनराइजर्स पोस्टेड 78 रन्स एट द एंड ऑफ द 6th ओवर. तो पावर प्ले में आपके 78 आ गए हैं. आज आपको सिर्फ 88 और चाहिए थे बाकी ओवर्स में. एंड अगर आप उस तरीके का मैच लगाए तो आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं कि आपका 15th ओवर तक मैच खत्म हो जाएगा अगर उस हिसाब से आप खेले, इफ यू कैरी द मोमेंटम. बट वो आपने चीजें मेंशन करी, आई थिंक वहीं पे वर्क करने की जरूरत है सनराइजर्स हैदराबाद को. एंड परहैप्स उसी रीजन की वजह से उन्होंने 2 मैचेस के अलावा मैचेस नहीं जीते हैं इस टूर्नामेंट में, एंड दे रियली नीड टू थिंक ऑन दोज लाइंस. बट ताउस मेंशन्ड सम कंसर्न्स विद देयर बॉलिंग लाइनअप एज वेल. साहिल, हम बात कर रहे थे ताउस और मैं कि पैट कमिंस ने अभिषेक शर्मा से पहला ओवर करवाया था आज, which seemed as a very interesting and a different decision. But you have bowlers like Bhuvi and Natarajan and others as well. With all these bowlers, experienced bowlers, and some youngsters as well, do you think they really need to find a balance in their bowling lineup? Yeah, I think right now the way Pat Cummins has, I'll slightly digress from the discussion. The way Pat Cummins has been bowling in the उसको रेसिप और मतलब कटर्स अपने फेंकने हैं. He's varying his pace really well, and he was kind of unplayable today the way he was bowling, and that is going to be very difficult for teams to kind of score off his bowling. I was slightly surprised when Shivam Dube was batting the way he did. There was an option of using Aiden Markram there, which they didn't, and using Travis Head as an impact player also robs them of a off spinning option, because they're not playing Washington Sundar. So Travis Head को आप रख के एक ऑफ स्पिनर का ऑप्शन हमेशा अपने पास रखो, बिकॉज शिवम दुबे जैसा बैटिंग कर रहा था वो, मतलब मैं क्या बोलूं यार, ताउस भाई की मुंह पे एकदम ऐसा लग रहा है सरस्वती बैठ गई है, वो जाने वाला है वर्ल्ड कप. ही इज मर्डरिंग बॉलर्स, द वे ही इज प्लेइंग स्पिन, दैट इज अनरियल कॉन्फिडेंस. ही नोज कि क्या होगा बॉल को पढ़ के. He is absolutely sure of his skills. But just about the overall balance of SRH attack, I think spin is where, ये थोड़ा पैट कमिंस को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपने स्पिनर्स में, चाहे वो शाहबाज हो चाहे वो मयंक मार्कंडे हो. अगर एक को भी मार पड़ता है, आप देखते हो कि वो वापस उस बॉलर की तरफ नहीं जाते हैं. ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है.
So वहाँ I think the more they play with Pat Cummins, the more he'll also have confidence in them क्योंकि first season है together. So it will take some time, but otherwise I think Natarajan, Bhuvi, Pat Cummins, they are a very formidable three-pace bowling attack. तीनों different areas of the match में ball फेंक सकते हैं. Bhuvi with the power play, Pat Cummins in the middle phase of the innings, Natarajan towards the end. So आपको three-phase bowlers बहुत अच्छे से spread out है. अगर वो स्पिनर वाला एक ये सॉल्व कर ले, आई थिंक अभी भी मुझे पता नहीं क्यों वॉशिंगटन सुंदर की जगह दिखती है टीम में. सर्कल के अंदर भी बॉल फेंक सकता है, सामने लेफ्टी आएगा तो तब भी फेंक सकता है और लोअर ऑर्डर में आके रन भी कर सकता है. सो वो थोड़ा अगर एक वो उस दोनों चीज हो जाएगा, वॉशी को अगर आप लेके आओगे, आपका मिडिल ऑर्डर भी सॉर्ट हो गया और आपको एक बॉलिंग ऑप्शन और मिल गया. No, I completely agree with you, Sahil. And it also takes me back to our pre-match live session where Taus asked, "Where is Washington Sundar?" He asked that question again and again, and he asked, why Sunrisers Hyderabad are not bringing him in the 11. So I think you have summed it up, and you have explained it pretty well. What are the loopholes in the Sunrisers Hyderabad side, what they really need to do in the coming matches. Let's take a few comments, and then we'll talk about Chennai Super Kings as well, because there are a few issues over there too, because it's their second loss in this IPL. What a knock by Abhishek. Even Travis Head was playing second fiddle in front of him. Great knock by Abhishek. And with that, let me tell you all that Abhishek Sharma has got a Player of the Match award, and he truly deserves it. Taus and I were just talking before Sahil joined that, what he was doing in the first 2 overs, it felt that there is some spring attached in Abhishek Sharma's bat, because the ball was just going outside the ground. So it was great to watch Abhishek Sharma. And if you haven't heard Sahil talking about Abhishek, his journey, so on and so forth, you can just rewind a bit and hear that once again. Well, let's go to Chennai Super Kings now. Taus, I remember in all the live sessions that we have talked, you have reiterated one point, and you have mentioned that, what's most important for CSK is Ruturaj Gaikwad coming in good numbers, in good runs. That's not happening. Now, if we can look at the scorecard, we'll find that, Shivam Dubey did his work. And he's been doing that from quite a while in this IPL. Ajinkya Rahane, we have seen those kind of performances only, although that was quite disappointing. 35 runs of 30 balls. But the openers, these two are of a great concern, Taos. Rachin Ravindra and Ruturaj Gaikwad. Ravindra did perform well in the initial matches, but Gaikwad, if this continues, Taos, will CSK even be in top 4? Absolutely, it won't be in top 4, and the dream, fairy tale end भी नहीं होगा मुझे लगता है धोनी का. क्योंकि यार, look at the numbers, just look at it's not just about the numbers, it's about the way Rachin Ravindra started the IPL. Everybody thought यार he'll take it by storm, पूरा change कर देगा, पूरा it would be something dream sort of for Rachin Ravindra, somebody who's gone from India to New Zealand to play cricket and then returning to play in Indian Premier League. बट यार, आपका जो ऊपर के 3 बैटर्स है ना, वो तीन एक ही स्टाइल के प्लेयर्स हैं. अनफॉर्चुनेटली, जो हमने पहले भी बात किया था प्री आईपीएल की, यार एक ही स्टाइल के बैट्समैन है जो स्ट्राइक रेट की तरफ अगर जाएं, रुख करें, तो दे आर नॉट वेरी वेरी कन्विंसिंग. एंड स्ट्राइक रेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट. इसी बात पे बहस हो रही है यार. विराट कोहली भी, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट रन गेटर्स, उनका स्ट्राइक रेट नहीं मैच हो पा रहा है, एंड देन व्हाई ही शुड नॉट गो टू द वर्ल्ड कप. Strike rate is a very important aspect when it comes to T20 cricket. You need to have a flying start like how Abhishek Sharma does, which helped Sunrisers Hyderabad most of the times to build a solid foundation for a chase, or maybe to give a strong total. तो यहाँ पर मुझे रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे एक ही कॉपी बुक स्टाइल, एक ही ब्यूटीफुल लुकिंग बैट्समैन, बट स्ट्रगलिंग टू get a good rocking, a solid start which is required, जिसकी वजह से वो इफेक्ट हो रहा है. सारा प्रेशर आपका मिडिल ऑर्डर पे आ रहा है. शिवम दुबे ऑब्वियसली वो he doesn't care about कौन ऊपर क्या करता है, नीचे क्या करता है, वो अपनी गेम खेलता है. That's how his game is basically. Then Ravindra Jadeja, I mean how Pat Cummins was happy to not allow that obstructing the field and allow him to stay on
ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजंस यार कि भाई इसको जाने मत दो, ये मारेगा ही नहीं, हमको पता है इसका स्ट्राइक रेट भी वैसे ही रहेगा, छक्के भी नहीं मारेगा, क्योंकि दैट्स हाउ ही इज। उसका ही इज Yeah, गेटिंग ओल्डर बट ही डजंट नो, ही इज नॉट एक्सप्लोसिव एज एनीबॉडी लाइक शिवम दुबे और मे बी इवन समीर रिजवी। तो ही इज मोर yeah, ऑफ अ ग्राफ्टर और ग्राइंड करेगा, टेस्ट क्रिकेट में ओडीआईज में चल जाएगा, टी20 क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता। ही इज नॉट इवन क्लोज टू एन अक्षर पटेल हु कैन swing the bat and put it in the stands. That is the mm, minus fan, and that could go against him when it comes to T20 World Cup. शायद अक्षर पटेल को चूज किया जाए या गो अहेड दिया जाए when it comes to going to वेस्ट इंडीज और अमेरिका, शायद हो सकता है देयर विल बी स्टिफ कंपटीशन। फिर जबरदस्ती बात आ जाती है डैरेन मिशेल के ऊपर प्रेशर, फिर उसके बाद आपका एमएस धोनी। आई मीन सॉरी अगेन एमएस धोनी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आई कुड सी पहली फर्स्ट 2 बॉल्स आपने देखा था कैसे दूसरे एमएस धोनी होते तो कुछ ना कुछ करते, वो मूव ही नहीं किए, उनको पता था वो मूव नहीं कर पाए क्योंकि ही कैन नॉट मूव, वो स्टिफ हो गए, उनका बॉडी स्टिफ हो रही है, नी में मूवमेंट नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ऑब्वियसली एज फैक्टर है धीरे धीरे और नी की इंजरी। तो आई मीन ओवरऑल इट्स द टॉप ऑर्डर विच इज स्ट्रगलिंग, एंड देन यू कैन नॉट ब्लेम द महेंद्र सिंह धोनी और द मिडिल ऑर्डर बिकॉज मिडिल ऑर्डर अपना थोड़ा बहुत काम कर रहा है। अगर समीर रिजवी इफ ही कुड हैव बीन प्रमोटेड एंड गिवन बैटिंग in place of धोनी, तो इधर उधर स्विंग करके कुछ ना कुछ रन जाता था। So it's the team is completely dependent on when it comes to strike rate and changing the game on शिवम दुबे। बाकी नहीं, बाकी कोई नहीं, हमें टॉप ऑर्डर What's को उनको interesting पूरा is, Sahil, what's interesting, Dhoni played 2 balls today, and Taus did complete analysis of those 2 balls. He mentioned what Dhoni did in those 2 balls that he faced. That's very interesting. But okay, let's talk about Shivam Dube. Taus ने बहुत बात करी है Shivam Dube के बारे में, and I remember before the start of IPL, Taus ने बोला था कि more than MS Dhoni and CSK, Shivam Dube should realize that it's a very, very big opportunity for him to see a place in the T20 World Cup squad, and he should bank on each and every opportunity that's given to him. Now, today, as we're talking about Chennai Super Kings team, Sahil, except Shivam Dube, nobody performed. With such kind of performances that he's been doing and showing in this IPL, do you think there are very high chances of him going to the US and the Caribbean? Still like 1/3 of the tournament is done, and like a large part of the IPL is still left. I wouldn't jump my gun and say that he's for sure, has cemented his spot, but the way he's playing every game, the way he's playing on different surfaces, taking on different types of bowlers, I think he is improving his chances with every passing knock. That is for sure. And he is going to create a big, big headache in that selection meeting. I'm telling you, it's going to be a pain picking this T20 World Cup squad. अभी पता है बाकी कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। बेन स्टोक्स ने वर्ल्ड कप से पहले बोल दिया मैं नहीं खेल रहा। हर कंट्री के 2 दिग्गज प्लेयर बोल देंगे कि हाँ हम नहीं खेल रहे, वी अलाउ द यंगस्टर्स टू प्ले। यहाँ पे हमारे सारे जो एक साल T20 नहीं खेले थे अब कह रहे हैं कि हाँ जी हम भी खेलेंगे। सो आपका जो पूल था जो आपने 15-16 का बना के रखा था वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो गया 25-30 में। अब बुमराह भी वापस आ गया, जड्डू भी फ्री है, मतलब अवेलेबल है, विराट भी है, रोहित भी है, Shreyas Iyer has also, kept his hat in the ring. KL Rahul is keeping. He also wants to play. Ishan Kishan very much wants to play. अगर आप इसको भी फिल्टर डाउन करोगे ना तब भी आपके पास 24 से 25 नाम तो क्लियरली आते हैं जो मेरिट पे अपने आप को पिक करते हैं। स्क्वाड आपको बनाना है 15 का। सो बिग हेडेक फॉर द सिलेक्टर्स। और शिवम दुबे अनफॉर्चुनेटली तभी खेल पाएंगे या स्क्वाड में जा पाएंगे अगर रिंकू नहीं जाते हैं, वरना आप जगह देखो ना स्पॉट्स ही नहीं है। हार्दिक पांड्या, और ऐसा भी नहीं है कि अगर इनमें से किसी का आईपीएल बहुत बुरा चला गया, रोहित का हो या हार्दिक का हो, तो आप उनको आईपीएल के बेसिस पर थोड़ी ड्रॉप करने वाले हो। इन लड़कों को जरूर कर दोगे बट आप उनको नहीं करने वाले, उनके लिए आप इतना कुशन बना के रखने वाले हो। तो अब देखना होगा कि ये बोल्ड कॉल्स लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि अगर आपने बोल्ड कॉल्स ली तो ये वर्ल्ड बीटिंग साइड बन सकती है अगर आपने बोल्ड कॉल्स ली। बट ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, ताउज़ा को भी पता है कि बोल्ड कॉल्स तो ली नहीं जाएंगी, वही सेफ टायर्ड एंड टेस्टेड प्लेयर्स जाएंगे। बोल्ड कॉल होगा तो युजवेंद्र चहल शुड बी द थर्ड नेम ऑन द टीम शीट द वे ही हैज बीन बॉलिंग। शिवम दुबे शुड बी देयर, मयंक यादव शुड बी फास्ट ट्रैक्ड, मोहम्मद सिराज shouldn't be close to the squad. All these things
अगर आप सिर्फ T20 के लिहाज से देखोगे, बट वो देखते नहीं है ना। हमारा जो देखने का मैग्नीफाइंग ग्लास है, हम देखते ऐसे हैं, उसके आगे हमें लाल बॉल भी दिख जाती है, 50 ओवर फॉर्म भी दिख जाती है, T20 को हम साइड कर देते हैं। तो मतलब फॉर्मेट स्पेसिफिक अगर सिलेक्शन हुआ तो हम अच्छा कर सकते हैं, बट वैसा होगा नहीं, इसलिए हम अच्छा नहीं करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि देखिए, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि 2024 का तो T20 वर्ल्ड कप है, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर 2024 में T20 वर्ल्ड कप है। तो सीनियर्स बोलेंगे भाई ये खेलने तो अगले साल, अगले साल तुम खेल लेना। तो इसमें वर्ल्ड कप 2 साल पे आता रहेगा T20, सो दे आर रिलैक्स, दे वोंट गो एनीवेयर फॉर बिफोर दिस वर्ल्ड कप। These seniors इतना बोलेंगे। But we want a trophy, Taos. We need, actually, more than want. It's a need now. We need a trophy. It's been really very, very long जब से trophy Yeah. यहाँ पर आई है. तो at the end of the day, what matters is कि आप कैसी भी टीम बनाओ, वो टीम ऐसी होनी चाहिए जो ट्रॉफी लेकर आ सके. उसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर डिस्कशन हो सकता है. But we want a team who can bring us a trophy. Well, that's that for today. We're talking about Sunrisers Hyderabad and Chennai Super Kings. As I started this live, I mentioned, CSK were never seen in this game. They have that batting power, they have the batting depth, but it was never seen in today's match. And then what Abhishek Sharma did, Travis Head, Aiden Makram, it was really, really a treat to the eyes. Well, while we were talking about Abhishek Sharma, he thanked Yuvraj Singh, his father, and Brian Lara for his match winning knock, so to say. Well, that's that for today. Tomorrow we'll meet again as Rajasthan Royals will lock horns with Royal Challengers Bangalore. Rajasthan Royals are unstoppable, and Royal Challengers Bangalore, they really need to find some area to just spot a win for them. Well, let's see what will happen tomorrow in Jaipur. Thank you so much, everyone, for joining with me, and thanks a lot for sending all your questions in. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।